And even if you lose, the amount of experience you gain is immense. Just say, Yes, yes. I keep telling this to a lot of my guests. When I went to IMF World Championships, right? I met people from Australia, UK, Yeah, Ireland, वगैरह. The the people who are performing the best in the ring were also the most intelligent. यार यानी उनको स्पोर्ट्स से निकालो, उनको साइंस की फील्ड में डालो, they'll probably do very well over there also. That हम्म, intelligence was what was winning in the fight, not just the skill. And I think yes, India mein, we give a lot of importance to skill, which is good, but we don't fight intelligently sometimes in the cage. And I think हाँ, wo, ये yeah, sorry. Yeah, so when you go to the competition like WBC Muay Thai, अगर World Championship में जा रहे हो, when you हम्म, get that perspective, that is very, very important for a fighter. जीतो हारो जो भी हो, you need to get that perspective. वो आपको एक्चुअली में बताता है कि आपको किस लेवल तक जाना है, किस लेवल का तैयारी करना है। तो Right. ये मेरे बहुत सारे फाइटर्स के साथ होता है, जिम में आए, ट्रेनिंग किया, 1 घंटा ट्रेनिंग किया, चले गए, 2 घंटा ट्रेनिंग किया, आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई हैव टू रिमाइंड देम एवरी टाइम आई गेट दिस एक्सक्यूज कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आदमी ट्रेनिंग करने पहुंचा हुआ है ना, दे आर डूइंग दिस फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। यू माइट टेक इट एज अ हॉबी कि Yes. luck happened and then you won a fight, but you have no idea what kind of hard work they are putting in. You know, Mm-hmm. अभी अगर अब बाहर जाओगे देखोगे तो समझ में आएगा। हम Right. लोग जब देखते थे सुबह सुबह, मतलब आई हैव जस्ट वोकन अप, आई एम लुकिंग फॉर कॉफी, और उधर दे आर ऑलरेडी दे डन देयर 5-7 किलोमीटर। वो अपना Uh-huh. कंडीशनिंग कर चुके हैं, और Mm. उसके बाद रिंग वर्क करने के बाद उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा। देन Right. यू नो 2-3 घंटे बाद they're back in the ring again, and then they're Right. doing it diligently, and this is something that our fighters lack. वो उसको Mm. लाइफस्टाइल के साथ ना वो मैच नहीं कर पाते कि उनको Right. ये चीज मतलब समझने में मुश्किल होता है, या उनको लगता है कि पता नहीं क्या कैसे करके जाएंगे। तो जितना काम Right. बाहर लोग डाल लेना, हम लोग को उतना डालना पड़ेगा, और इतना ना Yes. डालने के बावजूद वी आर डूइंग गुड एक्चुअली। इमेजिन अगर इतने एक्चुअली में इंटरनेशनल लेवल का काम हम यहाँ पे अगर करके जाएंगे लड़ने के लिए, तो कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते Right. And I think part of that reason is the culture also. कि like इंडिया में वो कल्चर है नहीं. एंड अगर बंदा करता भी है, द फैमिली लाइफ की इतना क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है. हैं। लाइक हाँ। बंदा जाके रिंग, आई मीन ही डू पैड वर्क विद यू, Yeah. अपना रोड वर्क करेगा, या हम्म, फिर जाके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करेगा. दैट्स हम्म, दीज आर थ्री वेरी डिफरेंट सेट ऑफ वर्कआउट्स, बट करना पड़ता है. एंड पीपल लास्ट की हम्म। इतना क्या कर रहा है, क्या उखाड़ लेगा इतना करके. ठीक है. ये रहेगा, ये अभी कुछ साल और रहेगा, तो ये राइट. लोगों को समझाना थोड़ा सा, मतलब लोगों का परसेप्शन भी टाइम के साथ चेंज होता है। अभी अभी एक राइट. नया प्रॉब्लम मेरे को फेस कर रहा हूँ मैं फाइटर्स के साथ, तो जो फाइटर्स वर कमिंग ऑफ एज, एक 25-26 साल के जैसे हो रहे हैं, तो हम्म. उनका फैमिली पुश कर रहा है कि जॉब के लिए देखना शुरू करो, या कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना शुरू करो। इधर यू वांट टू ट्रेन, जस्ट ट्रेन, बट ऐसा पूरा फुल टाइम मार्शल आर्ट को मत दो। राइट. अब आई हैव टू रिक्वेस्ट देम, अभी 1 साल और मांग लो, हम लोग और हम्म. लड़ेंगे और मेहनत करते हैं राइट. ना। ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, कई फाइटर्स के पेरेंट्स बाहर भेज रहे हैं, कुछ की तो शादी हो गई है, राइट. शादी हो गया तो गेम छूटा हुआ है, और ओके. फिर करियर की चिंता है उनको कि प्रो फाइटिंग में अगर नहीं बन पाया तो हम लोग करेंगे करेंगे क्या आगे। तो राइट. ये अभी नया चीज है, बट देन उसमें ये भी रियलाइज करें कि हाँ, मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा ना, जिसको करना है, फाइटिंग करना है, वो कर रहा है, वो शादी के बाद भी राइट. कर रहा है, वो बच्चों के बाद भी कर रहा है, और वो राइट. कुछ कर भी जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो दे आर मेकिंग इट हैपन। एंड राइट. एंड एंड वी हैव अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। I see Anshul Jubli fighting, and the kind of fighting IQ this guy have, Yeah. like इतना intelligent fighter मैंने शायद अभी नहीं देखा ना। राइट. और and he made it, I guess 4-5 साल के स्पैन में he has gone into the big league, and इससे राइट. बड़ा इंस्पिरेशन आई गेस नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं है इंडिया में। and then राइट. the plus point is कि younger people are looking up to him, and they want to take up fighting because they have that hope कि हाँ, राइट. इन्होंने किया है तो हम भी करेंगे। but then हम्म. काफी फाइटर्स यू नो थोड़ा सा वो ओवरवेल भी होते हैं, डर भी जाते हैं कि हाँ, उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने ही किया है, हम लोग का होगा कि नहीं होगा। राइट. Yeah, that and that is a little sad यार, because I mean MMA छोड़ दो, बॉक्सिंग भी जो अगर देखोगे, we've had amazing amateur boxers. Mary Kom is a legend, या but कभी प्रोफेशनल गई नहीं. हम्म, Right. And she never held that belt.
And मैं आज भी देखता हूँ people when I talk to people right who are fighting and I tell them right I have the same opinion as you कि 10-12 फाइट ले लो एमेचर में हम्म एक्सपीरियंस उठा लो टर्न प्रो हम्म जस्ट जंप द गन यू डोंट नीड टू बी लाइक कभी भी अनडिफिटेड रहना है पूरे प्रो करियर स्टार्टिंग एक हाँ दो फाइट हार भी जाओ दैट्स फाइन इट्स गुड एक्सपीरियंस एंड जस्ट या जंप इनटू इट यू विल गेट देयर दैट इज हाउ यू लर्न या but people are not willing to do it people say कि नहीं if there are people like Mary Com who never done professional how can we done professional right and there is no comparison I mean she did it for a whole different reason but वही I mean until that changes I think it'll take time but अब हो रहा है and we are seeing more people going out fighting out there so hopefully या fingers crossed. एंड Mhm. अब कितने सारे प्रमोशंस में आई गेस मैं कई बार ऐसे मैनेजमेंट कंपनीज को देखता हूँ कि ये इंडियन फाइटर साइंड अप फॉर दिस प्रमोशन यू Right. नो राइस फाइटिंग है नाइजा आई गेस आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्ट I think you're नाइजा right फाइटिंग है कजाकिस्तान में नहीं कहीं पे हाँ वहीं पे गए हाँ थे ना हाँ राइट उस तरफ ही है लाइक मैं राइट इंडियन फाइटर्स को देखता हूँ दे गॉट साइंड अप फॉर दैट प्रमोशन एंड देन आई स्टार्ट यस फॉलोइंग दैट प्रमोशन तो ये मेरा भी थोड़ा सा है कि मुझे एक्चुअली में बहुत कम इसका पता था बट देन इंडियन फाइटर्स आर बीइंग साइंड अप वन चैंपियनशिप में जा रहे हैं ना यस और ये इधर के प्रमोशंस में साइन अप हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है you know। राइट अभी एमेचर के अंदर ऐसा बड़ा मुश्किल है यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड एमेचर के अंदर अगर यू वांट टू मेक योर नेम क्योंकि एक एक प्रॉपर नेशनल कंपटीशन के अंदर 500-600 फाइटर आता है तो राइट उधर से निकल के प्रो जाने में और प्रो प्रो आई गेस प्रो लीग्स भी बहुत कम ही है इंडिया के अंदर जितनी कुछ खास है नहीं और बॉक्सिंग में तो बहुत ही मुश्किल है ये क्योंकि बॉक्सिंग प्रमोशंस तो I guess एक मुंबई में और एक दिल्ली में एंड I don't even know how they take up fighters. I tried contacting राइट them as well, but I never got a good answer. You know, तो अच्छा प्रो कॉम्पिटिशन्स के अलावा एमेचर जो होते हैं वो ये सब सब okay we seem to be losing Deepak again आ गया आ गया हाँ okay Deepak I can't see you but I can hear you मैं कैमरा अभी आएगा it's okay we can continue talking as long as the voice is coming through that should be good बॉक्सिंग में आई बिलीव प्रो नहीं है यहाँ पे और एमेचर के लिए यू हैव टू गो टू ज्यादा नहीं द है ये गवर्नमेंट चैनल्स यू नो उस स्टेडियम के अंदर जाकर के वहाँ पे राइट और इतना कुछ खास फैसिलिटीज है नहीं अपार्ट फ्रॉम सर्टेन फ्यू सिटीज हमारे शहर में तो बॉक्सिंग का थोड़ा सा राइट प्रमोशन मतलब स्टेडियम के अंदर अभी जाके कुछ बेटर हुआ है व्हेन आई वांटेड टू लर्न वेंट देयर स्टेडियम में तो ऐसा पेड़ के ऊपर एक वो टांग रखा था बैग दो स्टैंड के बीच में कौन सिखाएगा बोले यहाँ सीखोगे एंड आई बहुत छोटा था मेरे को समझ में नहीं आया मैंने कहा यार ये कैसे सीखेंगे बॉक्सिंग यहाँ पे ये तो बैग भी राइट नहीं है तो अब जाके फैसिलिटी रहा है उस टाइम पे था नहीं तो मैं राइट फिर चला गया मैं कहा नहीं दूसरे शहर पे देखते हैं जाके राइट नहीं बॉक्सिंग का मैंने देखा है आई मीन आई फॉट अ प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट इन बैंगलोर वहाँ ग्रास रूट प्रमोशन है but the हाँ हाँ problem with that is right unless you have the right connection with the right people you will not even know कि कहीं पे fight हो रहा है and इंडिया में एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द फाइट्स छोटे छोटे एक्सेप्ट लाइक यू सेड आई थिंक मरीन प्रमोशन बॉक्सिंग है बॉम्बे में मरीन हाँ ग्रास बॉम्बे रूट में प्रमोशन जो कमाल करता है बट वो भी आजकल दुबई में ज्यादा कर रहा है इंडिया में कम कर रहा है एंड पंच बॉक्सिंग है यहाँ पे पंच बॉक्स दिल्ली दिल्ली में हाँ नॉर्थ ईस्ट में एलपीएस प्रमोशन जो है वो काफी सारे बॉक्सिंग मैचेस करा रहे हैं बट लेकिन दे आर फेवर्ड टू देयर एथलीट्स वहां पे मिजोरम हम्म, के एथलीट्स हमेशा रहते ही एंड दे आर हम्म, टिपिकली द वंस विनिंग so जी it is a very difficult I understand why the athletes are struggling वहां पे कि अगर प्रो भी बन जाओ you don't know where to fight एग्जैक्टली वो गाइड करने वाले लोग थोड़े कम है इधर वो right तो ये इनिशियली आई फेस दैट स्ट्रगल यू नो व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे पता ही नहीं था कितना लड़ना जाकर के तो जो कंपटीशन right दिखता था आई लाइक यहाँ जाके देखते हैं फिर आगे वाले कंपटीशन देखें कहाँ जाएंगे तो right अल्टीमेटली आई फाउंड माय वे यू नो एक दो साल लगा इसको ढूंढने में तो फाउंड यू एक्चुअली आई फाउंड डब्ल्यूबीसी एंड आई फाउंड एमएमए इंडिया तो mm-hmm. दीज टू ऑर्गेनाइजेशन वो समथिंग जो एक अच्छा पिलर बना के रखे हैं इंडियन मार्शल आर्ट्स के लिए जो right एक्चुअली में प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि mm-hmm. यहाँ पे आके आप एक्चुअली में अपना करियर बना सकते हैं right no I'm glad you're doing that because unless you get that right you know uh, direction it's very difficult and one of the things which I realize athletes face as a challenge in India mein
is there are many federations, there are many associations. ठीक है. Yeah. And amateur level में it is very clear कि ठीक है, if you are fighting for one association, ideally don't fight for one more because it gets difficult for them. जैसे हम जब IMF गए थे, शिव जो है बैंगलोर हम्म, का, he had हम्म, fought IMF 1 year before and वहाँ पे बहुत ही बड़ा इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था, बंदा जीता था. हम्म, एंड IMF ने प्रमोशन डाला कि हम्म, इंडिया इज कमिंग बैक एंड विल समबडी एल्स रेप्लिकेट व्हाट शिव डिड लास्ट ईयर, ऐसे कुछ तो उन्होंने पोस्ट डाला था. द हाँ वेरी नेक्स्ट डे गामा का पोस्टर निकला, शिव वहां लड़ रहा है. सो भाई लो। ऑब्वियसली MMA इंडिया वाज फ्यूरियस कि ये क्या या हो रहा है. And I said, and in my opinion, an athlete should go fight wherever they have the opportunity. But amateur level, I understand federations have an issue because they're not able to, support the right fighters all the time because they don't know who'll jump where. But when you turn professional, there या should not be any restriction. You can fight anywhere and wherever. बट या इंडिया में वो मेंटेलिटी अभी भी है कि इवन इफ यू आर प्रोफेशनल, अगर आप WBC के लिए फाइट करो, डोंट फाइट फॉर WMC. इफ यू फाइटिंग फॉर WMC, डोंट फाइट फॉर WMO, which is ridiculous in my opinion. And I think that's holding athletes back. What do you think? ये प्रॉब्लम है आई गेस। ये नहीं होना चाहिए मेरे ओपिनियन में भी, क्योंकि Hmm. फाइटर को अपॉर्चुनिटी चाहिए ना। फाइटर एमेचर लेवल पे तो ऑब्वियसली आप ना पैसा कमा रहे हो ना, Hmm. आपको ना कुछ इतना कुछ वो मिलेगा। ये ग्रो Right. स्पोर्ट भी अभी ग्रो ही कर रहा है। तो Right. आई बिलीव कि फाइटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगा फाइट करने का, उसको एक्सपीरियंस गेन करने को मिल रहा है ना। एंड Right. एंड कई बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली लॉयल्टी फाइटर की बन के रहती है और फेडरेशन के साथ। Hmm. फेडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो फाइटर को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ग्रो कराने को दे रहा है। और अगर ऐसे टाइम पे एक फाइटर स्विच कर देता है तो हाँ, फेडरेशन बुरा मानेगा कि यार हमने प्लेटफॉर्म दिया, हमने मौका दिया अच्छा फाइटर बनने का, और फिर दूसरी फेडरेशन में चले, है ना। Right. लेकिन लेकिन फाइटर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ही शुड हैव दैट पावर टू डिसाइड मेरे को कहाँ से लड़ना है, मेरे को कहाँ पे Right. अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैं Hmm. क्योंकि ये क्रूशल है एक फाइटर की ग्रोथ के लिए। अभी अगर कोई Right. फेडरेशन कंपटीशन ही नहीं करा रहा है या फाइट करने का मौका नहीं दे रहा है, यू एक्सपेक्टिंग द फाइटर टू सिट बैक रिलैक्स, देखो अभी Hmm. अगले साल कंपटीशन होगा उसमें लड़ना, तब तक कहीं और मत जाओ लड़ने के लिए। तो वो Yeah, उसका that's not टाइम जा right. रहा है, Exactly. ये जा रही है हाँ। Exactly. You're right. You're right. So yeah, तो hopefully that will change. But पता नहीं, if it changes earlier, the better for Indian athletes. फाइटर्स अच्छा ना, फाइटर्स के पास ये है। हाँ sorry। yeah, go. Yeah, so no no one no thing I no wanted to ask you about, the last fight which happened, Naveen versus Kazan. या I want to hear from your words how the fight went and your experience through the entire process. मैं कैसे बोलूँ उसको, हमारा हार्ड लक था आई गेस। तो Hmm. एज डिफरेंस काफी था पहली चीज। Right. तो Hmm. कजान इज आई गेस 33 एंड Yeah. 30 प्लस आई वुड से 33, It's 30 मुझे plus. Yeah. एग्जैक्टली नहीं। हाँ, एंड नवीन इज Hmm. 2021। ठीक है। Right. तो जो एक चीज मैंने उसको बोला था कि मुay थाई में शिन का और एल्बो कंडीशनिंग बहुत अच्छा होता है, Hmm. एंड योर ओपोनेंट हैज एन एज एडवांटेज, तो टेक्निकली उसको ट्रेनिंग का एडवांटेज भी है ना। Right. तो कोशिश Hmm. करना कि कोई भी किक उसका चेक ना हो जाए, है ना। Right. शिन टू शिन फोन नहीं टकराना चाहिए, एंड Hmm. उसके अलावा ये गुड टू गो। तो नवीन Right. ऑल्दो ही हैज अमेजिंग पावर, उसका पंचिंग और किकिंग बहुत अमेजिंग है। Right. तो स्टार्टिंग से ही हमारा गेम प्लान था कि हम लोग हैमस्ट्रिंग को टारगेट करेंगे, इनर थाई को टारगेट करेंगे, फेस को टारगेट करेंगे, Hmm. ठीक है। Right. और सिन पे नहीं पड़ना चाहिए, एंड वी Hmm. डिड दैट, वी एग्जीक्यूटेड दैट परफेक्टली फॉर द फर्स्ट 4 राउंड। तो Right. अगर वो अगर उसका फोटोज आप देखोगे तो फैजान का इनर थाई वाज लाइक डूज, तो Hmm. एकदम हमने लाल कर दिया था मारते मारते। और Right. और नवीन डिडंट हैव अ स्क्रैच, ओ माय Hmm. गॉड ग्रेस, वो अच्छा लड़ा। तो वी हिट हिम ऑन द रिब केज, वी हिट हिम ऑन द फेस, वी Hmm. गॉट हिम ऑन द थाई, एंड Right. इट वाज गोइंग गुड। 4 राउंड में एक Hmm. फोर्थ राउंड में एक किक में वो बोन टू बोन कनेक्ट कर गया, एंड नवीन अच्छा. गॉट हर्ट। वो शिन Hmm. पे लगा एंड ही गॉट हर्ट, एंड केविन Right. स्टॉप द फाइट। He could see Hmm. Naveen was in pain, and I could see Right. how close we were to the belt, So, Right. Yeah. तो मैंने उसकी नवीन की तरफ देखा है ना, asked him, if you are good to continue, we'll continue the fight. इतनी Right. पास आके थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो। एंड Right. उसका पैर सूज गया था। वो Oh, एट okay. दैट मोमेंट आई वाज लाइक
कि यार ये Mm. चैंपियनशिप आने वाली, वी आर अबाउट टू मेक हिस्ट्री, यू नो. Right. But then Hmm. वो unfortunately that one kick, you know, that one when one shin block, you know, that hurt Hmm. him good, and we had to Right. forfeit. तो Oh, वो वाले फाइट में, तो फर्स्ट फोर राउंड वाज सो एक्साइटिंग. पहला तीन hmm. राउंड बहुत अच्छे से मारा, उसने भी मारा, हमने भी मारा. And I could Right. see the desperation in Kazan. You know, there was a point when we would actually go inside and hit him with an elbow. और वो Oh, okay. तो Hmm. वो तीन राउंड दो राउंड तक नहीं चल रहा था. थर्ड राउंड में आई गेस Right. ही केम इन एंड ही हिट हिम विद एन एल्बो व्हिच ही नवीन Hmm. डक. तो वो बस ब्रश अप करके गया उसके सर से. तो Right. मुझे दिख रहा था कि हाँ यार हमारे फेवर में फाइट जा रहा है. द Hmm. ओपोनेंट इज गेटिंग डेस्परेट. अभी अभी ये Right. मौका अच्छा है कि हम इसको स्कोर कर लेते हैं. Hmm. But nonetheless, I was happy with the result. मतलब ठीक है, we lost parents to us, and I could Hmm. see how good a fighter he became. Look, उसका confidence इतना अच्छा बढ़ा, उसको experience इतना अच्छा मिल गया उस fight से. So Right. he is actually pumped up. वो भी कुछ दिन पहले पूछ रहा था कि यार वो फिर से चैलेंज कर सकते हैं क्या. Right. ठीक है, मैं बात करके बताऊंगा क्या करते हैं इस बारे में. Right. Right. No, it was it was a. I mean, I watched it later as a recording. I couldn't watch live myself, but it was an amazing fight to watch. जो कहते हैं ना स्टाइल डिफरेंस होता है ना, तो हम्म. Naveen fought a way a low kick kickboxer fights, like rapid multiple strikes, and you should wear the leg down. That is his strike. And Kazan Yeah, was fighting the old traditional Muay Thai way. कि भाई yeah, कम strike करो, but try to damage if you can with checks and with those hard baseball bat kind of yeah, kicks. But Naveen did very very well, and to be honest, I was always under the impression Naveen will do well, but he surprised me by the quality in the fight. Because I think इससे पहले वो 5 राउंड लड़ा नहीं है ना. नहीं 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 नहीं, But 5 yeah, राउंड the का way नहीं he लड़ा. paced himself, you would never guess that he's fighting 5 rounds for the first time. So that was Yeah. amazing. So whatever you did with him worked. So continue doing that. And yeah, I think Naveen definitely is a future champion. And this is something I suggested to you as well. Like Yeah. maybe get more belts on him on the state level, then national level, and then we can take him from there. Because this Yeah, guy deserves to hold multiple belts, I and know, he's I very know. very young, right? So I, we need to I'm figure out getting a more way. fighters, you know. अब मैं Uh, मेरे पास अभी और भी आ रहे हैं इसी इसी मोटिव के साथ. अभी खूब सारा बेल्ट हम लोग खींचने वाले हैं. तो right. लॉट ऑफ फाइटर्स आर प्रिपेयरिंग और हर कैटेगरी में कर रहे हैं, यू नो, नॉट Oh, जस्ट great. विद हिज कैटेगरी. तो आई इवन Mhm. हैव द हैवी वेट कैटेगरी रेडी नाउ. तो अभी Oh, रिसेंटली nice. हमने एमएमए Mhm. ओपन में अभी गोल्ड मेडल स्कोर किया था. Uh-huh. द गाय इज ऑल्सो गुड. अभी उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं. तो लेके आएंगे, डब्ल्यूबीसी में लड़ेगा. तो Brilliant. तैयारी यही है That's कि और फाइटर्स right. Mhm. निकाले. इसी Right. इसी मोटिव से निकाले कि इस क्वालिटी के फाइटर और दे पाए हम लोग. तो Right. देखते हैं अभी पता चलेगा ये. Fingers crossed. Hopefully we get हाँ. more वहाँ से. And I hope you guys get some of the green and gold back into the Flying Bear gym. यस. यस. Great. So yeah, that was I won't take much longer, Yabi, because I know it's late Friday evening and you joined last minute. But या. before we leave, right? Do you हाँ. have anything to share with the people watching? Anything as advice to young fighters? Anything you want to share about yourself? प्लीज प्लीज गिव इट ऑल. आप अगर इफ यू वांट टू बिकम अ फाइटर और यू नो स्किल के साथ का अपना स्पोर्ट्समैनशिप उस पर काम करो. यू नो आई आई एक्चुअली फील लाइक अ फाइटर शुड नॉट ओनली बी अ गुड फाइटर बट अ गुड एंटरटेनर. तो Right. मेहनत करो अच्छे से यार, और प्लीज 2 घंटे से ज्यादा ट्रेन करना. दिन भर ट्रेन करो, स्किल्स को ब्रशअप करो. एंड रेपिटेशन इज की. डोंट Mhm. गो फॉर फैंसी स्ट्राइक्स. बेसिक्स पकड़ो और रेपिटेशन मारो 10-10 20-20 हजार. आप कर लोगे, ले जाओगे. बस Right. यही मेरा मैसेज है. So Bruce Lee said, "I don't fear a man who knows 10,000 techniques. I fear a man who practice one technique 10,000 times." एग्जैक्टली ये सुपर सीक्रेट है. ये अभी आज पता चल गया सबको. ये Nice. But great. Thanks, yeah. Thanks a lot, Deepak. And thanks for joining very last minute, I know, but we are very, very glad you could join. And we thoroughly enjoyed this conversation. So थैंक यू thank you सो so मच. much. थैंक यू फॉर हैविंग Okay. Chalo, enjoy your weekend. मी. बाय.